हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है हम करेंगे शाउट आउट टू ऑल द बिल्कुल। मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है मेंबरशिप। और अगर अभी आपके नाम नहीं पड़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा कौन कौन ज्वाइन इन हुआ एज मेंबर्स, उनके भी नाम जो है शाउट आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं देखिए भैया। नहीं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो भी मेंबरशिप है उसमें हमारा यहाँ पे बाइकर्स बड़े रहते हैं आ रही है क्या आवाज़? बाइकर्स की हो सकता है आपको आवाज़ आ आ रही रही है? होगी। ये नहीं आ रही, बाइकर्स यहाँ बताना। बहुत है, मगर अभी चले जाएंगे, टोली में जाते हैं। ओ टोली में, और जैसे शोर मचाते घूं घूं, और जिस तरह से वो ऊपर करेक्ट। करके, ओ बाय गॉड, एक मैं व्हील देख पे के तो चलाते हैं, यहाँ मैं पे तो ऐसे ही है। डर घबरा जाती हूँ जब देखती हूँ। चलिए वापस इसमें आए, तो पॉइंट ये था कि जो भी मेंबरशिप है उसमें पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग गुड वीडियोस जो पैसे से ड्रिवन ना हो। आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत कम यूट्यूबर्स होंगे जो बोलेंगे कि हम पैसे से ड्रिवन नहीं हैं, राइट। जो भी वो न्यूज़ लेके आ रहे हैं वो साधारण सी न्यूज़ को बढ़ चढ़ा के एंटरटेनमेंट न्यूज़ बना के लेके आ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल इवेंट क्या हो रहा है, सिर्फ ये है कि न्यूज़ को कैसे मसाला लगाया जाए जिससे लोग ज़्यादा देखने आए। और जब वो लोग ये सब बहुत करते हैं तो उनमें ईगो डेवलप हो जाता है। फिर ये होता है, मैंने ये कहा था ट्रू हो गया, मैंने वो कहा था ट्रू हो गया, मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरा ये हो गया, आप देख रहे हैं। तो ईगो आ जाती है इंसान में, साधारण इंसान में ईगो आ जाती है सक्सेस से। और उसके बाद वो सोचता है जो मॉडल मैंने पहले रखा है वो मॉडल बहुत अच्छा है, वो और उस मॉडल को करता है और करता है, उससे कंपटीशन पैदा होता है और लोग भी वही करने लग जाते हैं। तो ट्रू न्यूज़ बचती नहीं है, सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ हो जाती है। हर चीज़ को बढ़ चढ़ा के, हर चीज़ को बढ़ चढ़ा के, छोटी सी बात होगी उसको बड़ा बना देंगे वीडियो तो लगा के। हम चाहते हैं कि जो वीडियो देख रहा है वो ये समझे कि इसमें बहुत फ्लफ है, मतलब बहुत बढ़ चढ़ा के बोला जा रहा है। उसके बाद अगर आप वीडियो देखते हैं देन यू विल बी फाइन, क्योंकि लोगों को इमोशनल नहीं होना जाना चाहिए, राइट। आप देखते होंगे उन न्यूज़ पर के लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। जो हमारे मेंबर्स जो देख रहे हैं उनको इतना होगा, वो समझ पाएंगे देख के, भैया ये बढ़ चढ़ा के बोल रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जो आपको कभी पता नहीं चलेंगे। अजम्पशन से चलिए, उससे एटलीस्ट आपको बैलेंस न्यूज़ का पता लगेगा। और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा उस वीडियो में रोक के आपको पॉइंट आउट करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है कि ये देखो क्या बोल रहा है। अगर वो बोलता है कि बहुत बड़ी होगी, क्या वो बहुत बड़ी चीज़ थी? नहीं। तो मतलब जैसे कोई टॉपिक किसी का होता है बहुत बड़ी, वहाँ पे वॉर हो गई, आप देखेंगे यार ये पहली बात तो बड़ी नहीं थी ना, वॉर थी, छोटी सी लड़ाई थी, उसको तुमने न्यूज़ में इतना बड़ा करके भी दिखा दिया। जो जिसने अच्छा बोला उसके साथ हो गया, अगले दिन किसी और के साथ हो गए। तो उसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हमने जो है ये वीडियोस आएंगे जिसमें इंटेंस होती है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं बिना किसी बायस के तो आपको नज़र आता है यार ये गलत कर रहा है, ये ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ा के बोल रहा है, ये मसाला लगा के बोल रहा है, इसको अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, पैसे का पड़ा है बट ट्रुथ का नहीं पड़ा हुआ। और जहाँ पे जो सच्चे लोग होते हैं, मैं वही बताता हूँ कि ये सच्चा इंसान है अभी तक और वो ठीक ठाक कर रहा है। जो मीडिया में उसके आ रहा है उसको ले रहा है, आपको डेटा दे रहा है, आपको बोल रहा है ओपिनियन बना दो, ही इज़ गोइंग गुड डायरेक्शन। हो सकता है कल वो ना जाए, जब उसका प्रेशर पड़ेगा, जब उसको बोलेंगे तेरे नंबर से बड़े कमा रहे हैं यार, तेरे व्यूअर्स बड़े कमा रहे हैं, तू भी एंटरटेनमेंट जा, तो वो एंटरटेनमेंट न्यूज़ में जाएगा। और वैसे ही हमने वो ब्लैक एंड वाइट वाले भाई साहब का भी देखा था, जो ब्लैक एंड वाइट वाले भाई साहब भी कह रहे थे कि इतना प्रेशर पड़ता है टीआरपी का, जबकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, बट वॉट ही मेंट वॉज कि फेक न्यूज़ भी चलानी पड़ती है, बढ़ चढ़ा के बोलना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि टीआरपी के लिए। और उससे मैं फेडअप आ चुका हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आई थिंक वही हुआ होगा। तो चलिए अब जो मेंबर्स हैं उनके नाम हम पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कोई रैंडम ऑर्डर में है, कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं पता। फैक्ट स्टोरी बंगाली, हर्ष शर्मा, आर्य गुरुंग, नरेश गुप्ता, विशाल कुमार सार्थक, आई लव इंडिया, सुमित सोनी, विवेक सिंह, यश पटेल, परमार निलय, ग्राइंड एक्स शुभम, भारतेश नंदकर, AB टेक सार्थक, आदित्य दस्तीदर, गेम RX, रितेश भारद्वाज। फैंटास्टिक, थैंक्स। और आप फीडबैक देते जाइए और उससे पता चलेगा, बट बहुत कम लोग होंगे जो फाइनली यही कहेंगे कि बिना किसी पैसे के वी आर डूइंग इट। मतलब गोल इज़ नॉट द मनी,
आपका ये है कि गोल मनी नहीं है, गोल क्वालिटी, अच्छी चीज़ और साफ साफ चीज़ें बोलनी जो आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। तो चलो आज का जो अभी हम वीडियो करने वाले हैं वो है कंफर्म्ड एयर इंडिया 171 ड्यूल इंजन फेलियर एक्सप्लेन्ड। तो अब देखते हैं कि क्या अब इनका हमने वीडियो एक पहले भी किया था और अब देखते हैं कि इनको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है या क्या इन्होंने गैदर करके अब क्या कुछ नया हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, क्या और डिटेल्स पता चल रही हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। All right, the preliminary report on Air India 171 has just been released. It was released at midnight on Friday night at the very last minute to the general public. We've taken last night and this morning to go over all the information in it and to kind of assemble it in a way that we can explain to you from a cockpit perspective, almost a second-by-second delineation of what took place inside that cockpit. I did a video yesterday talking about the Wall Street Journal, Air Current, and the Reuters report that talked about the fuel control switches being placed at cutoff. That is consistent with what is in this report. In addition to that, there is some amplifying information about the timing of all of that. You can draw your own conclusions. In a preliminary report like this, they don't generally come to a definitive reason for why something was done. They just tell you the somethings that were done, and then you can draw your own conclusions. Now, the final report may be a year or two away. In that report, many times they will go to the why part of it and try to come up with a definitive reason for why. But I think it's pretty clear from this report exactly what happened in that cockpit on June the 12th. So let me begin at the top of the report, and then I'm going to amplify some of the information for you. It's absolutely fascinating, all right, and especially the conversation back and forth between the two pilots, because now we have the cockpit voice recorder information. That's something that Reuters and Wall Street Journal didn't have. So the background is this. On June 12th, 2025, that was just last month, Boeing 787 operated by Air India out of Ahmedabad to Gatwick Airport crashed about 60 seconds after takeoff. It was AI 171. We know all that information already. They assembled a team almost immediately. And over in India, it's the AAIB. It's their Aviation Investigation Board. Then they brought in the NTSB from the United States. You wonder, well, why did they do that? Well, because it was a Boeing product that was involved. And so they'll always bring in the country of manufacturer origin. So they invited the NTSB in addition to that. There were citizens on board from the UK, Portugal, and Canada. So they also invited the Canadian TSB and some others in to help assist with the investigation. The final team that was put together consisted of the NTSB from the US, technical advisors from Boeing, and GE. Why GE? GE was who produced those engines. So the engines on the wings were General Electric engines and the FAA. So all of that team with all the other players put together were assembled. The next page tells us who was in charge of the investigation. All of the local Indian authorities with all of their names are listed. And then underneath of it is a very interesting paragraph. And I'm going to read this next sentence and a half to you because I don't think anybody else has highlighted this or is talking about it, but I think it's absolutely germane to the root cause behind what actually happened in this crash. And here it goes. Experienced pilots, engineers, aviation medicine specialists, aviation psychologists, and flight recorder specialists have been taken on board as subject matter experts to assist in the investigation. Why in the world would they bring in an aviation psychologist to help with this investigation? I think that's absolutely critical and important to where this is going. I think a year from now or whenever the final report comes out, I think the aviation psychologist is going to be a huge player in the final conclusions. What this tells me is this. Once they downloaded the information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder, it was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. And so, therefore, I think having a psychologist involved in this conversation is hugely important. That's one of the reasons why we're going to open up a conversation on this channel going forward about the mental health and certainly the emotional health of pilots. In fact, we're going to do an interview here in just a few minutes after I get done with this video. We're going to bring in Dr. तो इनका कहना ये है कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कंफर्म हो रहा है कि
जो उनमें से एक बंदा था। किसी इन दोनों में से, क्योंकि कन्वर्सेशन से यही लग रहा है कि दोनों में से किसी एक ने जो है किया था। और उसको ऑफ पोजीशन में स्विच को किया था। अब ये ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये don't हाइड know, हो रहा है, देखते वो हैं। मुझे देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है कि कहीं से भी ये कंफर्मेशन तो नहीं हमें अभी दिखी तो नहीं थी, मिला अभी मुझे तक नहीं अच्छी। मिली थी। Charlie Carreri. Charlie is the absolute expert in this area of mental health for pilots. He is a pioneer in the field. He started a program called Project Wingman at my airline. Project Wingman now has been exported to many airlines around the world. Charlie is the guy that has spearheaded that effort. And in fact, Charlie sat on the investigation board for the German wings crash, which is very similar in scope to this crash here. So you want to hear from Charlie. Look for that interview later on this week. But let's continue on with the preliminary report. Over on the next page, it says this: all applicable airworthiness directives and air service bulletins. The difference between those two is this: a directive is something like a recall on a car. It's got to be done. So they will schedule the maintenance on that and they will replace whatever it is. A bulletin is just kind of a heads up. There may be an issue. Take a look at it if you want to. It's not any big deal. It's no safety of flight, but it's a bulletin, and we want you to take a look at it. There was an airworthiness bulletin directed about a 737 issue related to the fuel control switches, and they lay it out down here in the next paragraph. The FAA issued special airworthiness information bulletin, all right, that's the lesser of the two, on December 17th back in 2018 regarding the potential disengagement of fuel control switches in the locking feature portion of them. The bulletin was issued based on reports that operators of Model 737 airplanes, this is not the 787, but they are a similar type switch, the 737 airplanes, that the fuel control switches were installed, keyword, with the locking feature disengaged. All right, so let me show you a picture now on the screen of what the locking feature is. It's just a little piece of metal that's मतलब क्या उन्होंने इंस्टॉल ही ऐसे किया था जिसमें लॉकिंग नहीं है? 737 किसी और प्लेन की बात हो रही है कि उसमें इंस्टॉल हुए गए थे, पर उसमें लॉकिंग फीचर नहीं था, तो जिसकी वजह से वो स्विच अपने आप नीचे ऊपर हो सकता है? बट ये पर वो ये प्लेन नहीं था, वो किसी और प्लेन की बात हो रही है. flat on one side and it's rounded on the other. The switch now that is spring loaded gets grasped by the pilot's hands, it gets pulled out and it gets placed on top of that little flat piece of metal. When the two engage, that's the detent that holds it in place. And it can't jiggle out, it can't vibrate out. It stays in there. Why? Because it's spring loaded into position, but it's also held by that piece of metal. If that whole mechanism were installed upside down, which it could be, you couldn't actually put the fuel control switch into the run position. Why? Because it would slide off every time. It wouldn't lock into place. It would slide off. So if it was installed backwards, you would know that immediately. Apparently they had some installation problems. This is just my theory on what this is talking about. It was installed probably backwards or improperly, and they knew right away. Was that an issue on the 787 and Air India 171? No, it wasn't, because it's been working just fine. There were no issues with it as far as we know from any report, official or unofficial. So with that being said, take that for what it's worth, all right? But there was some wiggle room put in here for the fact that the fuel control switches might not have locked or engaged properly. I don't think that was an issue at all in this incident. Now, continuing on, I want to take a look now next at, and there's lots of information here about the crash and how the airplane landed and what buildings it hit and what part of the airplane hit first and second and all that. I want to go to the data now from the data recorder and the cockpit voice recorder, because this is the play-by-play, second by second, what took place in that cockpit, and it starts from the takeoff roll. So let me begin there. According to the flight data recorder, the aircraft crossed the takeoff decision speed of V1 and achieved 153 knots of indicated airspeed at 080833 universal time. So 0808 is the first time marker on this report. What is V1? That's the go, no-go speed. If you get to V1, you're going to go flying. You're not going to stop on the runway ahead of you. If you're prior to V1 and there's some engine failure, fire, whatever it is, and you're going to abort or reject the takeoff, you can do so in the remaining runway. You're going to stay on the ground. So they're past V1 now, so they're committed to go flying. They're at 153 knots. The V1 speed of 155 knots was achieved as per the flight data recorder at 080835. That's just 0.2 of a second, 0.02 of a second later. All right, the aircraft air-ground sensor transitioned to the air mode. I talked about that on yesterday's video. When you're on the ground, you're in the ground mode, and things are blocked out on the ground. For instance, if I were to inadvertently grab the landing gear handle and try to raise it,
Could you raise the landing gear on the ground? No, you're on the ground. The airplane knows that. That's blocked out. It won't let you do that. Could I deploy the rat on the ground? No. If I cut off both fuel control switches in the air, the rat would deploy. On the ground, no, you don't want that to happen, because every time I go to the gate and I set the parking brake, I cut fuel to the engines. So we want the rat to stay up. So air ground, the air logic is now in the air mode, consistent with liftoff at 08839. The aircraft achieved a maximum recorded airspeed of 180 knots, indicated airspeed about 08842. This is just tenths of a second later. And immediately thereafter, watch this, the engine 1 and followed by engine 2, fuel cutoff switches transition from run to cutoff. Position one after another with a time gap of 1 second. Why is that significant in our theory that it was done by one of the pilots? Let's say for some reason they just weren't in the detent properly, which is not a thing, but they were, and the airplane was vibrating. And I've heard some people talk about, did they just vibrate out of that position? They would have done so probably at the same time. The fact that they did so 1 second apart from each other is consistent with how we start and how we cut off the engines. So I'm seated in my seat over here, and let's say I'm the first officer. The fuel control switches are to my left. The first officer always starts and shuts off the engines. That's their duty. As the captain, I would instruct the first officer to start the engines. At that point, on the ground, the first officer is going to reach up to the start switches and turn them to start, and then reach down to the fuel cutoff switch, which is in the cutoff position. Lift it up and place it over the detent and let it go because it's spring-loaded. They are then going to grab the other one and do the exact same and let go of it. That whole transition takes about a second in between the two. 1 second is absolutely consistent with engage, engage. That's how it works. All right. Now, when we get to the gate and we go to shut them off, I will set the parking brake. I will say to the first officer, shut down the engines, please. He will take, or she, we'll take that first one, usually the left side, right? Because everything we do on airplanes is from left to right. The number one engine, the number two engine, we read from left to right. It's just natural. So we're trained to do that. So you grab the left one, cut off, right one, cut off. 1001, 1002. It takes about a second to do all that. So this is very consistent with what we think to be true so far, that a human being actually put them to cut off. They were positioned one after another with a gap of 1 second. The engine N1 and N2, those are the turbines inside the engine where we're getting a reading of how much power we're getting out of the engine. Both of those now begin to decrease from their takeoff values as the fuel supply to the engine was cut off. So when you put those two switches to cut off, it cuts off a valve in the engine and it cuts off fuel completely. The engines begin now to spool down, and we read that on N1 and N2. The pilots are going to hear it in their ear before they see it on the instrument in front of them. That's important. I'll come back to that in a second. In the cockpit voice recorder now, one of the pilots is heard asking the other, why did he cut off? Why did he cut off? Right? So now, if it had been just a mistake or somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, why did you do that? Right? You would say, what just happened? Or why did that happen? But you wouldn't say, why did you do that? Right? Mm-hmm. Why did he cut it off? So here's what's going on. You're driving, you're flying down. ये था होता कि बंद क्यों किया है? ये आज़ादर का बंद क्यों किया है? Right? वैसे बोलना था बंद हो गया है. ये बंद क्यों हो गया? ये बंद क्यों हो गया है? But he उसने ये बोला बंद क्यों है बोलना चाहिए था. But he said बंद क्यों किया है? हाँ. ये पूछने के बंद कैसे हो गया, ये बंद क्यों है. करेक्ट. उसने दूसरे से पूछा, एक बंदे से पूछा कि बंद क्यों किया है. हाँ, क्योंकि उसको मतलब उसको ये इसका मतलब कि उसको या तो उसने देखा है उसे बंद करते हुए या बंद क्यों किया. उससे ये नहीं बोला अरे माय गॉड बंद हो गया. हाँ, ये बंद क्यों हो गया. ये नहीं बोला. उसने दूसरे को बोला बंद क्यों किया है. उसने मैंने नहीं किया. मुझे अब मैं समझाती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया. अब जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं और कोई चीज़ उल्टी हुई है. Correct. और मुझे पता है कि भैया हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, तो मैं हाँ देख के बोलूँगी ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये बंद कैसे हो गया, ये बंद क्यों हुआ है, तो ऐसे बोलूँगी. पर अगर मुझे शक हो रहा है या मैंने देख लिया था किसी की इसने बंद किया है, तो मैं कहूँगी बंद क्यों किया है. एग्जैक्टली राइट. बंद क्यों किया है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बंद कैसे हो गया, ये बंद क्यों है, ये पूछने के बंद क्यों किया है. ये लग रहा है मुझे बोल रहे हैं. Down the runway, you get to rotate speed. So the other pilot calls rotate. You're the pilot at the controls. You pull the nose back of the airplane, and you're using your peripheral vision almost exclusively at this point. Why is that? Because when you pull that nose up, all you're going to see above you is sky.
You have no visual reference of anything. So now your peripheral vision watches the ground outside the airplane do like this as you're lifting off, and you've got a normal rate of climb that you're expecting to see happen. In addition to that, you're going to transition your view down to the scope in front of you, or the screen in front of you, that basically shows you're lifting off the ground at a normal rate. So all of those things are happening at the same time. Your peripheral vision is going to pick up anything that's not normal. And if the person next to you reaches over, or on this side, the first officer reaches over and grabs the fuel control switches, we don't know who did it, whether it was the captain or the first officer. It really doesn't make any difference at this point. One of the pilots did. The other pilot is going to see it out of the corner of their eye. At first, it's not going to register. You're going to go, what was that, right? And then you're going to hear it. And that's the biggest indication. You're going to hear those engines begin to spool back. At that point, you're going to go, whoa, wait a minute. Did I just see what I thought I saw? That takes a split second. You're going to turn to the other person and you're going to say, why did you do that? Now, whatever comes out of the mouth of the other person at this point is really kind of irrelevant. I think the report here goes on to say that after he said, why'd you cut it off? He says the other pilot responded that he did not do so. I have 8 kids, and every time I caught my kids red-handed in something and I would confront them with it, they would say, I didn't do it, all right? I don't think what comes out of the other pilot is relevant to this. There's only 2 people in that cockpit, and one of them saw the other do like this and heard the engines roll back. There is no procedure anywhere in the history of aviation where immediately after rotate, you grab both fuel control switches and place them to cut off. There simply is not. This was not a mistake. This was something that was done intentionally. So with that being said, it's consistent with 1001, 1002. The pilot now at the controls, or maybe the other pilot, maybe it was a pilot flying that did it. We don't know. Looks, confronts the other pilot. You're going to go naturally back and look outside the airplane for a second. Maybe you're going to push the power levers up. That takes a second or two. You got to work through denial for a couple of seconds. And then at some point when you see it registers with you what's going on, you're going to instinctively reach over and grab those fuel control switches and put them back in the run position. That happened here. So all of that, when they were placed to cut off, the rat deployed about 4 seconds later. That's consistent with how the rat works. That's why we saw the rat. And then the pilot now says, as according to the flight data recorder, both engines N2 values passed below the minimum idle. The rat deployed at that point. Now it goes on to say that the engine 1 left fuel cutoff switch transition from cutoff back to run at about 08852. All right, and this is 10 seconds later. So 10 seconds after they were cut off, they were placed, both of them were placed back to run. I think they were placed back to run 2 seconds apart from each other. So that would be consistent with 1001, 1002. He puts the one up, looking outside, okay, grabs the other one, puts it back up. At that point, the way the airplane is designed, it's designed to introduce fuel again to the engines, but also spark. You don't have to reach up and grab those start switches anymore. It's airborne, and it knows that you want those engines immediately, so it's going to give spark and ignition, and it's also going to give fuel. It indicates here that that both engines did light off, that they arrested the decay of the spool down of the engine. Engine number 2 fuel cutoff was also transitioned to run. We know that already when fuel control switches are moved from cutoff to run while the aircraft is in flight. Each engine's full authority dual engine control, the FADEC, right, automatically manages a relight of thrust recovery sequence and ignition of fuel introduction. All of that's taking place right now. The EGT, what is that? The exhaust gas temperature. That's the one of the ways that we measure how much power is coming out of the back of the engine, was observed to be rising for both engines, indicating relight. So they both relit, and that's good news at this point. Engine 1's core deceleration stopped, reversed, and started to progress to recovery. So that we stopped the decay, and we're starting to get a little bit of power out of this engine. Engine 2 was able to relight, but could not arrest core speed deceleration, and reintroduced fuel repeated to increase core speed acceleration and recovery. That engine never produced any positive thrust, and it was the 2 seconds later that it was behind engine number 1 at about 08:09:05 UTC. One of the pilots transmitted Mayday, Mayday, Mayday. The air traffic control inquired about the call sign. No further communications came from inside the aircraft. So the initial report that everybody was reporting, that there was a Mayday call from one of the pilots saying that they had lost thrust or thrust wasn't achieved, doesn't appear to be true.
This is just mayday, mayday, mayday. That's all they got at that point. At that point, one of the engines had begun to spool up. The other had not yet. It was too late. There wasn't enough thrust coming out of those engines, even though the pilot let's assume the pilot at the controls grabbed him and put him back to run. What a brave, heroic, and valiant presence of mind thing to do when you're going through what is an unthinkable situation shortly after rotate. The presence of mind of that other pilot is absolutely incredible. इस थ्योरी में एक मुझे गड़बड़ या क्वेश्चन ये है कि अगर एक पायलट जो था वो बैठा हुआ था और दूसरे ने कर दिया उसको कट ऑफ, और उसके बाद मेन पायलट जो भी था उसने पूछा भैया तूने ये क्यों काटा, तो उसने कहा मैंने नहीं काटा। अगर उसकी इंटेंशन जैसे कह रहे हैं अगर मेंटली वो अनस्टेबल था या कुछ था, अब वो करके उसको ना करता, वो क्यों करेगा फिर? उसने फिर उसको वापस ऊपर किया। अगर उसकी इंटेंशन थी और उसने जानबूझ के उसको कट ऑफ किया तो कोई इंसान उसके बाद वो कहेगा नहीं करूँगा और वो वेट करता रहेगा, पर उसने वापस रन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो नीचे गए वो उस पायलट ने नहीं, को पायलट अगर है तो उस को पायलट ने नहीं किया। ये हो सकता है अपने आप नीचे गया हो और उसको भी नहीं पता हो, और इसको लगाओ कि भाई सबको, और ये भी तो एंगल हो सकता है कि पायलट को लगाओ कि अपने आप तो ये जाते नहीं, जैसे इनको भी लग रहा है कि अपने आप नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसने एज्यूम कर लिया हो कि को पायलट ने जानबूझ के किया है, जबकि कोई टेक्निकल ग्लिच हो या कोई बटन में प्रॉब्लम हो और वो स्लिप होके अपने आप नीचे जा गया हो। कह रहे दोनों शट ऑफ होंगे तो इकट्ठे होंगे, ये चांस नहीं है कि एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा। वो नॉर्मली जब मैनुअली करे होते हैं तब 1 सेकंड का गैप होता है। इसके हिसाब से एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू हिम। हाँ। दूसरा, पर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कि जो मतलब जिसका इरादा है कि मैंने नहीं, मैं भी जाऊं, जाना है तो मैं जाने को तैयार है, तो वो जब पकड़ा भी जाएगा तो वो कहेगा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसका तो ब्रेन उस टाइप से चल रहा है। वो बंदा, लेट अस अज्यूम कि जो मेन बंदा है वो ऑन कर रहा होगा। अगर उसने बोला कि मैंने नहीं किया तो मेन पायलट में भी, और अगर मेन पायलट कर रहा होगा तो दूसरा वाला उसको रोकेगा, क्योंकि उसका तो वो नहीं रोका। बट द क्वेश्चन इज कि अगर ऐसी कोई बात होती तो कॉकपिट पे कोई चिल्लाता कि ये तो रोक क्यों रहा है, क्या कर रहा है। तो उसने रोका नहीं, मतलब उसने नहीं किया था, इसका मतलब उसने जिसने तो वो इरादा करके इतना बड़ा वो कर रहा है तो वो तो रोकेगा ना। एक बंदे ने यहाँ पे एक थ्योरी है ये कि एक बंदे ने रोका, दूसरे बंदे ने से पूछा क्या कर रहा है, तो ने क्यों किया, मैंने नहीं किया। फिर क्वेश्चन ये है कि मेन बंदे ने क्या ऑन किए कि दूसरे ने ऑन किए, वी डू नॉट नो। क्या हो सकता है फिर मेन बंदे ने फटाफट एक ऑन किया होगा, उसे टाइम लग रहा होगा, दूसरा ऑन किया होगा और चुपचाप वहीं बैठा होगा वो, और उसके बाद जो है इतनी थ्रस्ट नहीं बची और मेडे हो गया। एक ये थ्योरी है। आपको और कई और लोग भी थ्योरीज लेके आएंगे, सो वी लिसन टू हर बंदे की हम थ्योरी सुनेंगे, देखेंगे क्या मोस्ट प्रोबेबल है। हाँ, पर मेरा जो एंगल जो मैं सोच रही हूँ वो आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया होगा, आपको भी आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि जिसका इरादा बना लिया है, जो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, वो अगर पकड़ा भी जाएगा तो वो उसको जैसे कहते हैं ना, कोई मिशन, जैसे पागल लोग होते हैं जिनका मिशन होता है, तो वो मिशन को कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो तो मेरे को तो पकड़ के पता नहीं क्या करेंगे, तो वो तो पूरा उससे रोकेगा ना। इन्होंने कहा था कि ये फ्यूल वाले लेफ्ट में होते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा आपका को पायलट आपके राइट में है और राइट वाले के लेफ्ट में है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, पर उनका प्रोसीजर ये होता होगा कि को पायलट ही वो करता अगर उस पोजीशन में है जहाँ पे दूसरा पायलट रीच ही नहीं कर सकता, तब आप कह सकते हैं ओके कुछ और बात है। पर एक बात तो है कि मेन पायलट है, को पायलट है, लेट्स अज्यूम कि को पायलट ने घपला किया, और अगर आप पहुंच सकते हैं वहां पे, मेन पायलट पहुंच सकता है, मेन पायलट उसे ऑन कर रहा है, उसे टाइम लग गया 2 मिनट 2 सेकंड, वो भी सकता है, पर वहां पे मेरा अगेन ये क्वेश्चन होगा, तो फिर जिसने किया था वो उसको रोकने की कोशिश पता नहीं, वो शॉक में था, उसे लग रहा था कि अब तो गए काम से, मैंने क्या बुरा कर दिया। हु नोस किसके माइंड में क्या जा रहा है। कोई शॉक में होता है, कोई उसमें डेलिब्रेट में होता है कि ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो ये हो गया वो हो गया, अब तो जाने वाले हैं, जो भी उसके माइंड में चल रहा है, हु नोस, मे बी वो रिग्रेट कर रहा था क्या, वो भी डर गया और ये देख के कि क्या हो गया, आई डोंट नो, कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया लाइफ का, हु नोस क्या हुआ, या फिर टोटली ऐसा कुछ ना हुआ। हाँ, कि वो अपने आप ही कोई फेलियर हुआ, उसे एक ठक हुआ, उसके 1 मिनट बाद दूसरा ठक हुआ, हु नोस मैन।
तो चलो यार, आप भी बताना कि आपको क्या लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।